Namaste friends, welcome to TECHQA. This is QA Hub and today we are breaking down a topic that every interview panel loves to ask. आज हम समझेंगे UAT, User Acceptance Testing, जो टेस्टिंग जॉब्स में एक must know concept है. Most testers fail to explain UAT clearly, but today I'll explain it in the simplest real-time way with examples. Software is intentional. It's built for certain users and specific goals. And hey, updating or modifying it isn't magic. It takes planning, teamwork and a lot of testing. इसीलिए रियल यूजर्स के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर फाइनल रिलीज से पहले उन्हीं के पर्सपेक्टिव से टेस्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं UAT. So what is UAT? UAT, as we all know, is User Acceptance Testing. ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फाइनल फेज होता है जहां रियल बिजनेस यूजर्स सिस्टम को टेस्ट करते हैं. इसका मेन पर्पस होता है इंश्योर करना कि सिस्टम रियल वर्ल्ड बिजनेस नीड्स को मीट करता है या नहीं. ये टेक्निकल डिफेक्ट्स ढूंढने के लिए नहीं होता, ये होता है बिजनेस वैलिडेशंस के लिए. सो व्हाट इज बिजनेस वैलिडेशन? Does this software actually solve the business problem it was built for? क्या ये वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं? Let's see an example. Here we have took the example of e-commerce where they have set the rule of a free shipping rule. So what is the business rules? Orders above 999 qualify for free shipping. And what is the business validation? If user shops above 1000 or 1000, then he'll get the free shipping. And if user adds items below 950 or below 999, he'll get the shipping paid. And after applying all the discounts, फिर भी उसका अमाउंट 999 से नीचे आ रहा है, so shipping should not be free. This is business logics. So this is business validation. और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. अगर आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो तो UAT में बिजनेस यूजर चेक करेगा क्या विड्रॉवल डेली लिमिट सही है, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन रियल टाइम है, क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करेक्ट शो हो रही है. These are the simple business validations. So who performs UAT? UAT कोई QA टीम नहीं करती. UAT परफॉर्म करते हैं बिजनेस यूजर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, SMEs. Who are SMEs? ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस डोमेन या प्रोसेस के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं. They are subject matter experts. Next is end users and business analyst. So यहाँ पे QA टीम सिर्फ सपोर्ट करती है to execute scenarios or to capture bugs. So when does UAT happens? UAT always happens after SIT, System Integration Testing, and before production release. So if we see the flow, first SIT happens, then UAT, then go live. And when stable build is ready, then it is released in the UAT for the testing. So what are the types of UAT? UAT के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जैसे कि पहला है अल्फा टेस्टिंग. इट इज इंटरनल टेस्टिंग डन बाय एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स. एग्जाम्पल ई-कॉमर्स वेबसाइट. बिफोर रिलीजिंग टू रियल कस्टमर्स, internal QA team tests product search. Cart flow is checked, payment gateway is checked, filters and sortings are validated. And these all done inside the company. Second is beta testing. Beta testing is done by real customers outside the company before feature is officially released to the public. Example, Instagram regularly releases beta versions of new features to small set of real users. These users get access before everyone else. So Instagram tests new Reels editing tools,
new filters or effects, a different UI layout, new timing or audio features. Instead of releasing this to all 1 billion plus users, they choose a selected group. That is called as a beta testing. Third one is contract acceptance. As per agreement or business, contract validation. Here we see the example of a banking app project. Example, contract says login with OTP, fund transfer under 5 seconds, daily transaction limit display, PDF statement generation. During contract acceptance, all features must work. Performance must match contract and report must be accurate. If any clause is missing, client rejects delivery. Last is operational acceptance. So OAT, operational acceptance testing, checks whether the system can survive real world production conditions such as backup, performance, failover, security and day-to-day operations. So guys, यहाँ पे एक प्रो टिप है. द टाइप्स ऑफ UAT में से इंटरव्यू सबसे ज़्यादा फोकस अल्फा और बीटा टेस्टिंग पर ही होता है. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट देम. Let's see the real-time UAT workflow. Let's understand how UAT actually works in real projects. Step 1 is requirement review. Business team reviews user stories, BRD. What is BRD? BRD is business requirement document. Business का expectation क्या है वो समझ के लेते हैं. And this step ensures everyone is on the same page before UAT begins. Second step is UAT test planning. So what is the scope of the testing? What are the timelines and UAT scenarios? जो भी होते हैं वो finalize यहाँ पे होती है. And this step sets the entire direction of a UAT. Third step is UAT environment setup. UAT के लिए एक dedicated environment होता है. यहाँ पे ना dev ना QA but UA environment के ऊपर काम होता है. तो यहाँ पे UAT सर्वर, डेटा, यूज़र एक्सेस सेटअप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं. और बिजनेस यूज़र शुड गेट अ रियल एनवायरनमेंट. जैसे जो प्रोडक्शन में है वैसे ही एक रियल एनवायरनमेंट यहाँ पे मिले, इसकी कोशिश यहाँ पे करी जाती है. स्टेप 4 इज एग्जीक्यूशन फेज. ये UAT का मेन फेज है. यूजर्स बिजनेस फ्लोज एग्जीक्यूट करते हैं, अपने रियल बिजनेस फ्लोज एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि वो वैसे ही चलेंगे जैसे प्रोडक्शन में चलने वाले हैं. Next step is defect logging. UAT defects are strict blockers because these defects directly affect business का काम. So release cannot move forward until they are fixed. After defects are fixed, then comes the sign off. If everything is all right, every defects are fixed, then we give a sign off for the UAT and we decide whether this code goes to production or not. Next is difference between SIT versus UAT. So what is SIT? SIT is System Integration Testing. यहाँ पे SIT QA टीम परफॉर्म करती है और UAT में बिजनेस यूजर्स और SMS परफॉर्म करते हैं. SIT में फोकस टेक्निकल बग्स पे होता है. UAT में फोकस हमारा बिजनेस फ्लो एंड रियल लाइफ सिनारियोज पे होता है. SIT अर्ली फेजेस में होती है और UAT बिफोर रिलीज, बिफोर फाइनल फेज के पहले होता है. SIT रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग होती है. जो भी रिक्वायरमेंट हमें मिली है उसके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं. और UAT जो रियल वर्ल्ड यूजर्स बेस्ड टेस्टिंग है उसके ऊपर होती है. SIT में हम सिस्टम कितना स्टेबल है दैट विल चेक. और UAT में बिजनेस एक्सेप्टेंस चेक होता है क्योंकि इसके बाद हमें गो या नो गो देना होता है, लाइक वेदर दिस विल गो इन प्रोडक्शन और नॉट. सो SIT इज लाइक चेकिंग इफ अ कार इंजन वर्क्स. UAT इज लाइक टेकिंग द कार फॉर अ रियल रोड टेस्ट. तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ UAT. अगर आप QA फील्ड में नया शुरू कर रहे हो तो UAT का क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू लाइक द स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन
प्लीज़ डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, SIT, SQL बेसिक्स, API टेस्टिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।